Hello everyone. Very good evening. Welcome to this session with Learn फटाफट. So आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स का टॉपिक एंड ये है क्लास सॉरी ग्रेड 10 साइंस का साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस. सो इसमें आज हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स. लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड दिस टॉपिक एंड आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. एंड आफ्टर आई एक्सप्लेन टू यू द रिमेनिंग पार्ट विच इज अबाउट द ब्लड वेसल्स. तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली तीन मेन पार्ट हैं. फर्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द पंपिंग ऑर्गन जो है हार्ट. सेकेंड इज अबाउट द ट्यूब्स दैट इज द ब्लड वेसल्स. और थर्ड पार्ट है अबाउट द सिस्टम जो इस इंजरी में या लीकेजेस में काम करता है, दैट इज द प्लेटलेट्स. तो पंपिंग ऑर्गन दैट इज द हार्ट दैट वी हैव फिनिश इन द लास्ट क्लास. और बाकी के जो दो हम कंपोनेंट्स आज पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो आई विल टेल यू अबाउट द लिम्फ. लिम्फ क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं व्हाट इज दिस लिम्फ. ब्लड के बारे में तो फिर भी थोड़ा क्लैरिटी है, बट लिम्फ कहाँ से बन गया, कैसे बन गया, व्हाट इट इज. So that also I'll tell you today. And उसके बाद हम थोड़े से करेंगे MCQs to understand the topic better. Okay, Krish. Hi Krish, good evening. How are you doing? You're in class 8. Okay. तो देखो लोअर क्लासेस में भी आपने इसमें से बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं. Many things will be already you must be knowing, और थोड़ी सी चीजें होंगी जो आपको नहीं पता होगा, जो आपको अब पता लग जाएंगी. Okay, so are you ready? Let's get started. Life processes पढ़ते हैं. तो ये जो 6 टॉपिक है इसको कंटिन्यू करेंगे आज. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस. सो थोड़ा सा आई गिव यू अ रीकैप अगेन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एवरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस इन द बॉडी लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सब कुछ सारे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाना एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को वापस कैरी करना टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. ये सारी ट्रांसपोर्टेशन होती है बिकॉज ऑफ मेनली कौन सा फ्लूइड इन द बॉडी, दैट इज बाय द ब्लड. और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है दैट वी हैव स्टडीड इन दिस. फर्स्ट उसमें है जो पंप करता है इस ब्लड को पूरे बॉडी में. Who does that? The heart. Heart pumps it. And then secondly, that the blood which is carried to all the tissues of the body. Who does that? That is done by the blood vessels. ठीक है. And third thing is that अगर इस सिस्टम को मेंटेन करना है, if there is some injury to the blood vessels, then who maintains them, who repairs them? They are the platelets. So I have told you in detail about the heart. So today we will see these two things and also एक और circulatory fluid जो है हमारी बॉडी में, that is the lymph. Okay, is it clear? Let's see then. So ये हार्ट वाला पार्ट हम स्किप करेंगे and I will start from blood vessels. ठीक है. So this is what we are going to start today. तो अगर आपने पिछला सेशन about heart, especially the structure of the heart, the chambers, what happens, कौन से chamber में क्या होता है, which are the receiving chambers, contraction, relaxation, systole, diastole, okay, and double circulation, humans में double circulation क्या होता है. If you want to know all these things, then all you have to do is आप लर्न फटाफट के YouTube चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में आप वो वीडियोस देख सकते हैं. Okay, so let's see these blood vessels. So as you can see in this diagram, देखो दो मेन टाइप के ब्लड वेसल्स वी कैन सी हियर. कौन से? आर्टरीज. यू कैन सी दिस जो रेड साइड में दिखाए हैं, दिस इज द आर्टरीज, एंड जो ब्लू साइड दिखाया है दैट इज वेन्स. ठीक है. आर्टरीज एंड वेन्स. सो मेनली देयर आर 3 types of blood vessels. Arteries and veins तो हो गया.
Can you tell me what's the third type? I'm sure you know about it. तीसरा टाइप ऑफ ब्लड वेसल कौन सा है? कैन यू टेल मी? चैट सेक्शन में आप मुझे आंसर दे सकते हो. आर्टरीज एंड वेन्स यहाँ पे ऑलरेडी लेबल की हुई है. एंड द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल जो जिसकी सबसे थिन वॉल्स होती हैं, दैट इज यस द कैपिलरीज. ओके, सो जो यहाँ पे है कैपिलरीज. नाउ क्या है ये आर्टरीज और वेन्स? व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम? फर्स्ट हम ये देख लेते हैं. सो पहला मेन पॉइंट विच यू शुड नो इज दैट arteries carry blood from heart to the various body organs and veins क्या करती हैं? They collect the blood from various body organs to the heart. ये है इनका पहला मेन डिफरेंस. Arteries will always carry blood. और कौन से टाइप के ब्लड ऑब्वियसली कैरी करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. प्लीज रिमेंबर, arteries carry oxygenated blood from the heart to all the parts of the body. हार्ट से जो सबसे बड़ी आर्टरी निकलती है कौन सी है? वो एओर्टा. फिर एओर्टा बाद में जाके ब्रांच हो जाती है, इट फॉर्म्स अदर आर्टरीज. एंड हर ऑर्गन में जो आर्टरी एंटर करती है वो इसका एक अलग नाम होता है. फॉर एग्जांपल किडनी में जो एंटर करती है वो रीनल आर्टरी होगी. ओके, लाइक दैट. बट मेजरली आर्टरीज का फंक्शन क्या है? दे विल कैरी द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड from the heart to various organs of the body. कौन से चेंबर से कैरी करती हैं? कैन यू टेल मी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चेंबर से पंप होती है टू द बॉडी? थिंक अबाउट इट. यस, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से. इफ यू रिमेंबर हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखो. लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है हार्ट टू द होल body. Okay. Hi Angad. How are you doing? Yes. Very good, very good. Attend कर लो और मुझे जवाब भी दे दो साथ के साथ. I'm sure आपने बहुत ये सब बहुत पढ़ा होगा. हाँ, 9 का सेशन है आज 8 बजे. ठीक है. 8 PM is there. Yesterday also it was there. But I think you were missing in yesterday's session of 8 PM. है ना? Yesterday we had done the maths test. Okay, so let's continue. So arteries carry the oxygenated blood from the left ventricle hearts to various body organs and veins. Body organs में यानी body tissues तक पहुंचेगी blood और उसके बाद every cell will use the oxygen and give back carbon dioxide to the blood. तो ये जो deoxygenated blood है which is not oxygen rich, deoxygenated blood, oxygen इसमें भी होता है, ऐसा नहीं कि it has zero oxygen, but it has comparatively less oxygen. So deoxygenated blood is carried back to the heart from the body organs through the which blood vessel? Through the veins. ठीक है. Now ये देखो, ये एक general rule है, but can you tell me what is the exception here? Arteries carry oxygenated blood. Is this true for all arteries? If there is a question like this, क्या लिखोगे आप? So obviously it is not true for all arteries. एक artery है body में which carries deoxygenated blood. Can you name it? Okay, you will be attending today. ठीक है अंगद. Very good. No problem. No problem. Yesterday's session you can see again. ठीक है, in the playlist of the YouTube Learn Fatafat channel. So arteries, exception is pulmonary artery. Pulmonary artery carries deoxygenated blood. कहाँ से? If you remember last session, heart to the lungs, oxygenation के लिए लेके जाती है. ठीक है. Similarly, all veins will carry deoxygenated blood with the exception of pulmonary veins. ये जरूर याद रखो, it's very important. Pulmonary vein क्यों exception है? क्योंकि pulmonary veins carry oxygenated blood where to where?
from the lungs to the heart. ठीक है? Is this clear about arteries and veins? 8 points. ठीक है? चलो. So this is the first point. Now I will show you the next thing. Let's see here the next thing. What happens? What is the difference in artery and vein? Now second we will see is, मैं ये थोड़ा सा erase करती हूँ this part so that next point में overlap नहीं. Okay. Now जब blood is flowing through the blood vessels, तो blood exerts pressure known as blood pressure. कोई भी liquid जब कोई ट्यूब में फ्लो करता है तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करता है ना, ट्यूब में या पाइप में भी जब पानी फोर्स से आता है तो यू नो इट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द पाइप walls of the pipe. Similarly, blood also exerts pressure on the walls. This is known as blood pressure. Blood pressure is a normal term जो आपने तो सुना भी होगा. So now you know what is the meaning of blood pressure. Now can you think कि arteries or veins में will this blood pressure be equal? Arteries and veins, are they having equal blood pressure? What do you think? So if you know, obviously you know कि heart is a pumping organ. कहाँ से पंप होती है ब्लड? हार्ट से पंप होती है. तो पंप जब हार्ट से हो रही है तो ये जाती है आर्टरीज में डायरेक्टली. So what does this mean? This tells you कि हार्ट में ये obviously the pressure exerted by the blood will be more. और फिर ये बॉडी ऑर्गन्स में जाके and then afterwards it goes back to the veins. तो वेन्स में जब तक ये पहुंचती है उसका प्रेशर हो जाता है कम. ठीक है? So arteries obviously experience a high blood pressure, high pressure compared to the veins. And because of this reason, जो स्ट्रक्चर है, जो आर्टरीज की वॉल्स हैं, they are much thicker, okay, and elastic compared to the walls of the veins. क्योंकि आर्टरीज को ज्यादा प्रेशर झेलना पड़ता है. That's why arteries have thick walls to handle the high blood pressure, जबकि वेन्स की वॉल्स इतनी थिक नहीं होंगी. ठीक है? ये हैंडल नहीं है. Veins have thin walls as the blood pressure there is lower. Clear? So arteries की ये walls, देखो walls means if I draw like this artery, तो ये जो इसकी walls हैं ये एकदम thick होंगी और vein में वो thin होंगी. Okay, that's the second point of difference. Now let's see what is another point of difference between arteries and veins. तो फर्स्ट था टाइप ऑफ ब्लड एंड कहाँ से कहाँ कैरी करती है ब्लड. सेकेंड वाज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द थिकनेस. ठीक है? 1 minute. एंड नाउ हियर यू कैन सी आर्टरीज आर कैरिंग द ब्लड और यहाँ पे ये कुछ अलग ही स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको. सो व्हाट हैपेंस व्हेन द आर्टरीज कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी. देखो हाउ इज द साइकिल, हार्ट टू द बॉडी और फिर बॉडी से फिर से हार्ट में जाती है ब्लड. ये कौन करता है? वेन कैरी करते हैं, ये आर्टरीज कैरी करती हैं. नाउ हियर व्हेन इट हैज टू गो टू द बॉडी, बॉडी में इसको कहाँ पहुंचना है? इट हैज टू रीच द बॉडी टिश्यूज. टिश्यू मीन्स द ग्रुप ऑफ सेल्स. ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी में ये जो ब्लड के कंपोनेंट है यानी ऑक्सीजन जो ब्लड कैरी कर रही है वो पहुंचना चाहिए. राइट? हाय सागर कुमार, गुड इवनिंग. सो हाउ, अब आर्टरीज की वॉल्स तो काफी थिक हैं. सो आर्टरीज में से तो ये ऑक्सीजन नहीं बिल्कुल भी पास हो सकता टू द सेल. वेन की वॉल्स भी इतनी थिन नहीं है दैट द ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स कैन एंटर और लीव द सेल. So we need some smaller blood vessels known as capillaries, because capillaries की thickness एकदम कम, यानी कि these are just one cell thick. The walls of the capillaries are just one cell thick, and because of this what happens is the
exchange of materials and gases can easily take place between the कैपिलरीज यानी बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग्स, यानी जो टिश्यू में जो सेल्स को रिक्वायरमेंट है, लाइक ऑक्सीजन एंटर करेगा इन द सेल फ्रॉम द ब्लड टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल एंटर फ्रॉम द सेल टू द ब्लड. ठीक है, सो दैट इज कैपिलरीज एंड देन दीज कैपिलरीज टिश्यू में ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो जाने के बाद these capillaries will again join to form a vein and फिर वो वेन क्या करेगी, वो फिर से वो ब्लड कैरी करेंगी from the tissue and organs to the heart. ठीक है, did you get it about arteries and veins? Okay, so this I'm going to delete now. Okay, 1 minute. Here one more difference I will tell you. Arteries and veins में one more important difference is arteries do not have valves. No valves are present in arteries, but veins में there are valves are present. Okay, valves का function क्या होता है? That is to ensure that the flow of blood is in one direction only, unidirectional, to prevent the backflow of blood. क्योंकि you know veins में ब्लड का प्रेशर इतना नहीं ज्यादा होता, तो अगर ब्लड ऐसे फ्लो हो रही है लाइक दिस, सो देयर विल बी द वाल्व्स जो ब्लड को अलाउ करेंगे इन दिस डायरेक्शन, लेकिन नॉट इन दिस डायरेक्शन. दैट टाइम दीज वाल्व्स विल क्लोज एंड दे विल नॉट अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन द अदर डायरेक्शन. आर्टरीज में वी डोंट नीड वाल्व्स बिकॉज आर्टरीज में द प्रेशर ऑफ द ब्लड इज ऑलरेडी सो हाई दैट वो एक ही डायरेक्शन में ही फ्लो करेगी. Is it clear? Do you have any question? So that was one more important difference between arteries and veins. Okay, now अब ये ब्लड वेसल्स तो हमने पढ़ लिए, ट्यूब्स पढ़ लिए, एंड नाउ वी हैव सीन कि कैसे जब हार्ट पंप करेगी ब्लड को, तो द ब्लड इज गोइंग टू रीच ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, नॉट द ब्लड इज गोइंग टू रीच द कैपिलरीज एंड वहां से वो ट्रांसफर करेगी न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब एक्सचेंज होगा. नाउ मेंटेनेंस, अगर ऐसे कोई ब्लड वेसल में देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इंजरी, देन व्हाट विल हैपन, इंजरी हो जाएगी तो क्या होता है, ब्लीडिंग विल हैपन, एंड ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए देयर इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, दैट इज प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स, दैट इज द थ्रोम्बोसाइट्स, है ना. क्या करते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, द ब्लड प्लेटलेट्स, दे विल, इनका मेन फंक्शन क्या है, whenever there is a bleeding, injury to the blood vessels, इंजरी होती है जब ब्लड वेसल्स को, ठीक है, यानी कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट ऑब्वियसली, तो इफ देयर इज अ ब्लीडिंग तो ये ब्लड क्लॉट बना देंगे प्लेटलेट्स. ठीक है, इसका भी एक पूरा प्रोसेस है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. There's a series of steps how this blood clot is formed. Prothrombin, thrombin and then fibrin, ये सब mesh बना देते हैं. ये blood clot होता क्या है, it's a mesh like structure, जैसे threads की एक mesh, this threads क्या है, fibrin होते हैं. Okay, तो इसमें भी platelets play a major role, and ये जो हमारा system है blood vessels का, that is maintained by these platelets. Okay, ठीक है. So platelets is the maintenance system of the transportation. Now let us see what is the meaning of lymph. In our body there are two circulatory fluids. Okay, actually अगर two circulatory fluids which circulate in the body, मेन सबसे तो ब्लड है which everyone knows, लेकिन एक और फ्लूइड है that is lymph. अब ये lymph कहां से आया और कैसे बना? So this lymph is also coming from nowhere else, लेकिन ब्लड से ही आ रहा है, ब्लड का ही एक पार्ट है. कैसे बनता है lymph? Let me show you. So the lymph capillaries, ठीक है, lymph capillaries, see let me show you in this diagram.
Okay, so in this diagram what you can see, ये है this background, ये जो brown है, these are the, this is a tissue, or tissue means the group of cells, so these are the cells, and this is the arteriole. Arteriole क्या होता है? It is the terminal branch of the artery, and this is a venule, that's the branch of the vein. venule बाद में join होंगे, vein बन जाएगी, and arteries जब branch होती है तो arteriole बन जाती है. And then this is a artery, this is a venule, यहाँ से blood. तो blood जब यहाँ पे आई, and then ये capillary system है, that I already told you कि what is the capillary. Now you know that the capillaries are, the capillary walls are very thin, just one cell thick. And ये देखो, ये capillary walls ऐसी होती हैं. Okay, you can see what is the thing here. Capillary walls जो हैं, उनमें there are ये pores हैं, there are these spaces. See, there are some very small spaces of pores in the capillary walls. So capillaries are carrying the blood, है ना? तो ये क्या होता है, ये जो छोटी छोटी स्पेसेस हैं, कैपिलरी हैं, दे आर कैरिंग द ब्लड वेयर, इन द टिश्यू सेल्स में. सेल्स को gaseous exchange will happen here because of capillaries. लेकिन from these pores what happens is, from the pores in the capillaries, ये some things will ooze out from here. क्या निकलेगा इसमें से? ब्लड का कौन सा पार्ट निकलेगा? Some of the plasma will come out. प्लाज्मा तो लिक्विड होता है, ओके, जो उसमें यानी कि मेनली वाटर, देन सम प्रोटीन्स एंड सम ब्लड सेल्स. ब्लड की कुछ सेल्स लाइक द WBCs, मेनली WBCs में भी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, तो ये सब जो है ये कैपिलरी वॉल से ooze आउट कर देती हैं, एंड दे कम इन दिस स्पेस. कौन सी स्पेस? इंटरसेल्युलर स्पेस. Intercellular means what? Intercellular means the space between the cells. So if these are the cells, like you can see here, all these are cells, for example, and the space between them is known as the intercellular space. Intercellular space या फिर extracellular space. This word is also given in the textbook, तो confuse नहीं होना है. दोनों का मीनिंग एक ही होता है. Extracellular means सेल के बाहर की स्पेस. तो सेल के बाहर की स्पेस मीन्स अगेन दिस स्पेस, एंड इंटरसेल्युलर स्पेस मीन्स स्पेस बिटवीन द सेल्स. सो व्हाटएवर यू कंसीडर इट. सो फ्रॉम दिस capillaries, the blood which is traveling from there, these things will ooze out from these small छोटा छोटा pores जो है capillaries में, and वो ऐसे ही इसने टिश्यू में स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे. that fluid is known as lymph. ठीक है, this is known as lymph. Lymph is also, that's why it is also known as tissue fluid. ठीक है, did you understand meaning of lymph? So lymph is also known as tissue fluid. लेकिन अब just remember कि lymph और plasma में, lymph and plasma, what is the difference? lymph is colorless, plasma is like slightly pale yellow, लेकिन lymph is colorless and it has less proteins compared to plasma. So this is like two differences जो आपको दिया है in the textbook, so you should know it. Now ये जो इसमें आ गया, अभी ooze out हो गया ब्लड में से, अब इसका क्या होगा lymph का? What will this lymph do now? अब ये कहाँ जाएगा? यहीं पे रहेगा क्या? No, this lymph which is there in the tissue, this will, इसमें दो चीजें हो सकती हैं. या तो ये जाएगा into this lymph capillaries. You can see these green ones. These are the lymph capillaries. या फिर it will go back into the blood capillaries. ठीक है, two things can happen. This lymph will either enter the lymph capillaries or it will re-enter the blood capillaries depending upon the composition of blood. कि कॉन्सेंट्रेशन जो है उसकी थिकनेस उसका मेंटेन करने के लिए ब्लड की. सो डिपेंडिंग ऑन दैट ये या तो ब्लड कैपिलरी में फिर से जाएगा या तो इट विल गो इनटू दिस lymph capillary. Lymph capillaries then join together to form these lymph vessels,
The larger vessels which you can see, lymph capillaries will form the lymph vessels, and these lymph vessels will then join the larger veins. See here, you can see these will then join the large veins. Finally ये फिर भी again it enters the blood only. हार्ट में ये फिर से जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक है, थ्रू द जो सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा है, उन्हीं वेन से वो फिर से ब्लड सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा, यानी ब्लड में ही उसको बनाया और फिर से जाके वो ब्लड में ही मिल जाएगा. दैट इज व्हाट इज लिम्फ. ओके, इज इट क्लियर? ठीक है. सो I'll just write down, okay, pathway of lymph. आप नोट करके रखो. lymph intercellular spaces में ooze out होने के बाद it will enter the lymphatic capillaries, जो lymph vessels बनेंगे, and finally they will rejoin the larger veins like superior vena cava and inferior vena cava. Okay, ये venule में दिखाया है, and those will directly again join the blood circulation in the heart. अब ये लिम्फ का काम क्या हुआ, ये निकला है यहाँ पे, ये कुछ है इसका काम या कुछ नहीं है? ऑब्वियसली इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस एक्चुअली. फर्स्ट फंक्शन इज टू कैरी द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट. डाइजेशन में यू हैव स्टडीड स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई पढ़ा था हमने, विलाई. ओके, सो इट कैरीज द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, जो है डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम, कहां पे था ये, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, दैट इज वन मेन फंक्शन ऑफ द लिम्फ. एंड सेकेंड मेन फंक्शन इज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कि ड्रेन्स द excess fluid. It will drain the excess fluid back into the blood. Drains the excess fluid back into the blood capillaries. Back into the blood. Okay, because composition of blood also has to be maintained. So that's about lymph. So blood is our main circulatory fluid, and blood का ही एक part निकल के आता है lymph. And lymph also has, इसके नाम से ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें मोस्टली देयर आर lymphocytes. Okay, lymphocytes जो WBCs हैं, they are very very important for fighting infections in our body, and they produce antibodies. That's one very important function. फिर lymph nodes होते हैं. There are many other things about lymph, but you don't have all that in the portion. Okay, students. So this was about transportation in humans, and now let's do some practice questions. Okay, so I hope you will be able to answer these questions. मुझे इसके answers आप chat section में लिख सकते हैं. So the first question is, the blood leaving the tissues becomes richer in dash. First is carbon dioxide, second is water, third is hemoglobin, and fourth option is oxygen. So what will be the correct answer? Blood which is leaving the tissues becomes richer in which thing? So obviously this will be carbon dioxide. क्योंकि टिश्यू से ब्लड जो लीव कर रही है, इट इज गोइंग टू कैरी विद इट द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल, जिसमें से एक मेन होता है कार्बन डाइऑक्साइड. सो हियर क्वेश्चन 1 आंसर विल बी ए, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट इज, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द arteries. So read the statements carefully. I'll read them for you. तो हर स्टेटमेंट रीड करके उसका जो क्या सही है क्या गलत है वो मैं आपको बताती हूँ, एंड आप भी मुझे ट्रू है कि फॉल्स है हर स्टेटमेंट के लिए बता सकते हैं. तो पहला है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. दैट इज राइट. ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर.
ये भी सही है. Collects the blood from different organs and brings it back to heart. ये पार्ट गलत है क्योंकि आर्टरीज तो ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया फॉल्स. लेट्स सी द सेकेंड वन. दे हैव थिन वॉल्स विद वाल्व्स. ए तो बिल्कुल ही गलत है, थिन वॉल्स तो है ही नहीं आर्टरीज में. नेक्स्ट इज थिक इलास्टिक वॉल्स. यस. ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर. नो, फॉल्स हो गया. ये भी फॉल्स. फोर्थ वाला चेक करते हैं. दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स. यस. विदाउट वाल्व्स सही है. ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर. ये भी सही है. And they carry the blood away from the heart to different parts of the body. This is also right. तो इसका हर पार्ट सही है, which means the correct statement that describes arteries in this question 2 is D. Okay, so each and every part पे ध्यान देना है. जब भी स्टेटमेंट आते हैं ऑप्शंस में, आपको बहुत ध्यान से इसका आंसर लिखना होगा. Okay. Okay, now in which of the following vertebrate group or groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? Heart does not pump oxygenated blood, ये बोला है. अब हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड ह्यूमंस में तो ऑब्वियसली करता ही है पंप. एंड व्हाट आर वी आर मैमल्स. तो लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन ही नहीं है. चलो, दिस इज पाइसेस एंड एम्फी. सो यू नो एक जो है पाइसेस जिसमें हम फिशेस पढ़ते हैं, ठीक है, फिशेस मेनली. इसमें हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड. हार्ट पंप करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन फिशेस. ओके, फिशेस में दो ही चेंबर हैं हार्ट में. सो दिस इज फॉर एग्जांपल हार्ट, दो ही चेंबर हैं. एंड ये है गिल्स. सो गिल्स में ही जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है वो होता है. यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है और डीऑक्सीजनेटेड ही निकलती है. दैट इज व्हाट हैपेंस इन पाइसेस. सो फॉर पाइसेस वी विल राइट पाइसेस ओनली. बाकी सब में पार्शियली होता है. हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, एम्फीबियंस में भी, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में भी. सो हियर द आंसर विल बी पाइसेस ओनली. Okay, fine. Did you understand? Let's see the next one. Okay, and yes, fishes में, पाइसेस में there is also single circulation. ये क्वेश्चन भी क्योंकि सिंगल सर्कुलेशन का था, इसके लिए. Single circulation, that is blood flows to the heart only once during one cycle of the passage through the body. So again single circulation होती है सिर्फ फिशेस में. That is the पाइसेस. अब यहाँ पे पाइसेस, ठीक है, तो here you should know the names. अभी यहाँ पे this is NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, तो it is not anything out of the syllabus, तो ये आपको मालूम होना चाहिए. Okay, so I'll just tell you. ये जो है लैबियो, हिप्पोकैम्पस, एक्सोसीटस एंड एनाबास. These are all fishes. ठीक है, फिशेस या पाइसेस लिख देती हूं मैं. देन ये सारे फिशेस हैं. देन सैलमेंडर, हाइला, राना. लेट्स यूज another color. Salamander, hyla, rana, chameleon, draco, turtle. तो salamander, hyla and rana ये क्या है? ये है amphibians. Okay, amphibians, land and water both, like frog. And draco, chameleon and turtle. Draco, chameleon and turtle. These are all the reptiles. Then whale, dolphin, pigeon and parrot तो आपको पता ही है कि birds होते हैं.
चलो ये तो ठीक है. Whales and dolphins are what? Whales and dolphins are mammals like humans. Okay, ये है mammals. So here सिंगल सर्कुलेशन होता है ओनली इन स्पाइसेस. बाकी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस में, reptiles and amphibians, there is partial double circulation. Please remember. And mammals में there is double circulation, like humans में. ठीक है? तो obviously here the correct answer will be, question is about single circulation. That the blood flows to the heart only once. So इसका आंसर क्या होगा जिसमें सारी spices हैं? That's the option B. Got it? Okay, next one is, what prevents the backflow of blood inside the heart during contraction? So, what prevents the backflow of blood inside the heart? So, heart में contraction यानी कि अगर ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सो ब्लड जो है फिर से इसमें नहीं जानी चाहिए एट्रियम्स में, क्योंकि वेंट्रिकल से तो वो यहाँ से जाएगी लंग्स में एंड यहाँ से वो जानी चाहिए बॉडी में. It shouldn't go back to the atria. So for that, what is there in the hearts? That's very easy. Preventing backflow का आंसर बहुत easy होता है. That is always valves. So first option is valves in the heart. Second is thick muscular walls of ventricles. No. Thin walls of the atria. नहीं. All of the above भी नहीं. Okay. And let's see the next one. So yeah, this is a little big statement वाला question और है भी ये last question. तो ध्यान से इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें सही क्या है. पहले तो what is asked here, which of the following statement or statements is या are true about heart. हर पार्ट को पढ़ते हैं और देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला है. तो एक ऐसे ही हम स्कीमेटिक डायग्राम बना लेते हैं जस्ट टू विजुअलाइज. दिस इज राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम यानी कि ये receives oxygenated blood. That's right. You know that left side of the blood has oxygenated blood. Right side of the heart has deoxygenated blood. ठीक है? So they are saying left atrium receives oxygenated blood. सही है. From different parts of the body. Left atrium receives from different parts of body. नहीं. This is wrong. लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन कहां से? लंग से, नॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट इज राइट. while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. Right ventricle deoxygenated blood to lungs. Yes, that is right. सेकेंड स्टेटमेंट पूरा सही है. थर्ड इज लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल. ये क्रॉस कैसे हो गया? लेफ्ट टू राइट तो होता ही नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. व्हाट इज द फोर्थ वन? राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये राइट एट्रियम है. Yes, receives deoxygenated blood सही है. From different parts of the body भी सही है. Left ventricle pumps oxygenated blood. Left ventricle pumps oxygenated blood to different parts. Yes. So we can see here second or second or fourth statement जो है, they are completely correct. So which option will we choose? A, B, C, D में से choose करना है हमें. So option A is 1, option B है 2, C है 2 and 4, D है 1 and 3. So obviously 2 and 4.
यानी कि ऑप्शन सी वी विल मार्क हियर एज द करेक्ट आंसर. ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड विद दिस आई होप आपको ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस का टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. दो पार्ट में हमने इसको कवर किया था, एक आज का सेशन एंड वन वाज द प्रीवियस सेशन. एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टार्ट विल बी ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होगा. ठीक है, वेर यू विल मेनली स्टडी अबाउट जो प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, वाटर, फूड, ये सब कौन पूरी करता है, कैसे. दैट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास which is yes, आज क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. Thursday same time we will continue with transportation in plants and after that हमारा एक ही लाइफ प्रोसेस बचेगा, एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन फिर देखेंगे ह्यूमंस में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है, एंड दैट विल कंप्लीट हमारा लाइफ प्रोसेस का बड़ा चैप्टर जो है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, and it's a big chapter. And after that the science portion is over, will be over. Chemistry के chapters हमने कर लिए हैं, physics is also done. So after this chapter we will start doing the practice questions. टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देंगे हम साइंस की. ठीक है, so you can join me Thursday 5 p.m. for this next class. And in case of any doubt, write to me in the comment section. और लेक्चर समझ में आ गया है, टॉपिक इज क्लियर, देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. सो हैव अ नाइस डे. बाय बाय.